I am really very pleased to interact with you today on most burning topic, that's climate change, and so many dimensions of climate change. Apan climate change bishe janichanti? Who can tell me what is climate change? Apan mane samaste future leaders of the state and country, and today no life without no life, no work, nothing without climate change. It's a global concern. आपण माने बदर climate change कहले कौन बुझंती कई जने दियन कहबे कि I'll be very happy, and that will make me easy. It will be easier for all of us to understand the subject together. Please tell your name and tell what do you understand the climate change. Sir, climate change. One by one. Please, your name, please. My name is Dr. Arkan Isra. Okay. Sir, according to my suggestions, climate change is not a single word. It refers to different kind of activity that impact on our environment to changes to a rough or dusty atmosphere, which could impact our day-to-day life. Also, we could get harm in our future also. Very good. Okay. A lady was talking. Please. Somebody was trying to answer something. Okay. I think broadly, if you understand climate change in a simplistic term, आमे ताको ओडिया रे कहते जलवायु परिवर्तन. And what is the difference between climate change and weather? Can anybody tell? So climate change is a long-term process. Weather is a short-term process. In your day-to-day life, suppose हमारा ଏବେ गोटे क्लाइमेट गोटे वेदर अछि खरा होछि टिके परे पुनी वर्षा हला सेटा अछि वेदर चेंज. क्लाइमेट चेंज माने गोटे लॉन्ग टर्म पीरियड ने सेटा गोटे क्लाइमेट चेंज. Very good. So weather is for daily affairs, and climate is long term kind of things. So in a nutshell, I can tell you that এই জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যাটা সারা পৃথিবীরে বহুল ভাবে দেখা দিয়েছে এবং সারা পৃথিবীর লিডর মানে দেশ মানে সাইন্টিস্ট समस्ते बर्तमान से क्लाइमेट चेंज को नहीं भयभीत. से क्लाइमेट चेंज रे कौन सेटा आम आज बुझा एवं से क्लाइमेट चेंज को नहीं कि आज जो परिस्थिति किछि ब्रॉडली सम ऑफ द पॉइंट्स ऊपर आम आलोचना करबा. आपन जेमिति कहिले क्लाइमेट चेंज होउछि गोटे लॉन्ग टर्म बेसिस रे शिफ्टिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. क्लाइमेट चेंज goes with another word called global warming. Global warming अर्थ आम earth get heat up both naturally and by man-made or anthropogenic activities. Naturally आमे जेतेबेले पृथ्वी रे रहउचंती we get sun rays and earth get heats up. एंड जितेबाला आम मैन मेड कथा कहते मनीष 1850 मसीहा पर जब देखा जाउची गोटे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता जो थे आम पाखे स्टीम इंजिन उद्भावन होता. से स्टीम इंजिन को परिचालना करने आलोक बा एनर्जी शक्तिर आवश्यकता होता.
से शक्तिर उत्स विशेष करी कोयला एंड फसिल फ्यूएल्स ही व्यवहार करा जाउथला तार व्यवहार एते मात्रा बढ़िला जे 1850 मसीहा बेलू ताको आमे कहते आप जिते क्लाइमेट चेंज कथा बुझे से गोटे दीटा स्टेज आसो गोटे हूँ इंडस्ट्रियल आ गोटे प्री इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल जदि आमे देखा जाए जे कॉलोनियल ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड को आमे मोस्टली भी इंडस्ट्रियल कहूँ कहीं से कॉलोनाइजेशन आरंभ कले अन्य देश जियोग्राफी को मूव कले एनक्रोच कले एवं तांकर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कले जहाज आसिले स्टीम इंजिन व्यवहार कले एवं स्टीम रे माने आपनकर शार्ट पेंट ठू आरंभ करिकी अनेक गुड़िए कार्यक्रम जेतबेले कले सेतेबेले बहुल मात्रा रे कोयला एवं फसिल फ्यूएल्स बा हमर जो पेट्रोल हैला डीजेल हैला आकु व्यवहार कले 1850 मसीहा बेलू को प्री इंडस्ट्रियल फेज रे आपण देखिए सदा बेले जेते साइंटिस्ट बा जेते प्लानर थिबे से गोटे टार्गेट रखिथिबे जे आपण देखिते जे प्री इंडस्ट्रियल पीरियड पर ठारू आमे एई रेट रे गरम करि पारिले पृथ्वी बंचिबो प्री इंडस्ट्रियल बेलू को -5.5 थिला सेंटीग्रेड थिला कोन टेम्परेचर 1885 रु 1980 पर्यंत जो टेम्परेचर राइज होउथला से टेम्परेचर पृथ्वी सस्टेन कला भाया अवस्था थिला एते डिस्टर्बेंस हेई नथिला किंतु 1980 परे 2020 भितरे आमर इकोनॉमिक एक्टिविटीज एते बढ़ी जाइछि सो देयर इज ए मेजर शिफ्ट इन टेम्परेचर नाउ फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल फेज टू 2023 द हॉटेस्ट ईयर ऑफ on the record on the earth प्राय 1.47% डिग्री उपरे पृथ्वी आमर गरम हबार लगी हिटिंग अप हबार लगी जहाँ को आम टेम्परेचर जोड़ा आम कहते ग्लोबल वार्मिंग से दीटा कथा देखिए क्लाइमेट चेंज कहले गोटे हूँ राइजिंग ऑफ द टेम्परेचर व्हिच इज ग्लोबल वार्मिंग मेजर्स इन सेंटीग्रेड एंड फारेनहाइट्स आउ गोटे हूँ क्लाइमेट चेंज इफेक्ट दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स अर्थ आगुरु आमे जो ऋतु उपलब्धि करुथिले बा मानव समाज जो ऋतु सहित तालमेल देके जाउथिला से ऋतुरे माने बहुत गुड़े डिस्टर्बेंस सृष्टि होइछि एक्सट्रीम वेदर खरा हेले खरा अधिका हबो लॉन्ग स्पेल दैट इज ए वर्ड कॉल्ड ला लिना एल निनो अधिका शीत हब अधिका वर्षा हब एवं तार फ्रिक्वेंसी एवं इंटेंसिटी बहुत जोर बढ़ी जीवो एवं क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स लाइक ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स फ्लड्स फ्लैश फ्लड्स एंड रिवरन फ्लड्स वाइल्ड फायर्स so many things happens so climate change को आमे ब्रॉडली दुईटी दिगरे बुझी पारिबा गोटे होची जेहेतु मनीष जनित इकोनॉमिक एक्टिविटीज द्वारा ग्रीन हाउस गैस एमिशन मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेन विलेन जेनेरेट होउची एवं एटमॉस्फेयर रे कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर हो गला परे आमर एटमॉस्फेयर हिटिंग अप लगी से जो हिटअप होउची ताहा द्वारा अनेक डिस्टर्बेंस देखा दौची तेणु आपण को गोटे हूँ ग्लोबल वार्मिंग आउ क्लाइमेट चेंज जो दुईटा कथा कहली गोटे तार इफेक्ट होची जे एक्सट्रीम वेदर इवेंट से सारा पृथ्वी रे वर्तमान क्लाइमेट चेंज को केमिति परिहत करा जिवो से विषय रे आलोचना करा होची एवं 1982 रे जेतेबेले सारा पृथ्वी चिंता कला तेणु यूएन लेवल रे IPCC इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज करागला जो थे यूएन बछा बछा साइंटिस्ट को धरिकी एटमॉस्फेरिक सिस्टम को स्टडी करिवार लागिले एवं देखिले जे आमे ये जो अहेतुक गरम होउची बा अहेतुक हिटिंग अप होउची सेथुर हम मुक्ति केन पाइबा तेणु वर्तमान पर्यंत IPCC पीरियडिकली प्राय 6 रिपोर्ट 6 रिपोर्ट देइची
जो रिपोर्ट को लेकी यूएन लेवल रे जेते कंट्री अछंती प्राय 195 कंट्रीज रु 206 कंट्रीज जो माने वर्तमान मेंबर अछंती से दे ऑल आर डिबेटिंग हाउ टू कटेल हाउ टू रिड्यूस द एमिशंस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एवं लेटेस्ट आपन को दीटा कथा मन रखिया पड़िबो जोतरे एमिशन रिडक्शन पई क्योटो प्रोटोकॉल COP21 रे थिला एंड पेरिस एग्रीमेंट जोड़ा थिला 2015 रे ये दीटा रे क्लियरली मेंशन करा है जे नेशनल लेवल रे प्रत्येक नेशन कना थरे कार्बन डाइऑक्साइड बा मिथेन निर्गत हेले दैट गोज टू होल एटमॉस्फेयर एवं जेहेतु होल एटमॉस्फेयर जाए एवं सेथिरे रिचर कंट्रीज माने जो माने ऑलरेडी याकू निर्गत करिकी इकोनॉमिक फायदा नहीं सारिचंती से माने वर्तमान emitting less compared to those who are in developing states like China, India, other countries. सेथिपाई गोटे वर्ड अछि क्लाइमेट जस्टिस रे ए जो डेवलपिंग कंट्री माने कहबा चाहूचंती जे कार्बन एमिशन बा जीएचजी एमिशन टा को आपण जदि एबे बंद करिवे आमे जो डेवलपमेंट लेवल रे अछु ताले हमर अर्थनैतिक प्रगति हेई परिबो नाही जदि अर्थनैतिक प्रगति हब नाही ताहले आमे जो सामाजिक एवं अर्थनैतिक स्तर रे आम लोक मानकर डेवलपमेंट हेई परिबो नाही ये आर्गुमेंट करूचंती एवं द्वितीय आर्गुमेंट करूचंती जदि आपण चाहूचंती जे एमिशन रिडक्शन हब सेथिरे प्लीज हेल्प अस इन मनी वी डोंट हैव मनी टेक्नोलॉजी we have to adopt technology to reduce greenhouse gas emissions. So eta hochi broadly the things joutare IPCC achi UN is playing the role ebong prati varsha COP ba conference of parties re sabu country mane alaga alaga desha re alaga alaga location re basuchanti ebong monitor karuchanti je ame कार्बन डाइऑक्साइड बा जीएचजी ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिडक्शन रे कोन करूचंती आमे अडॉप्शन लेवल रे कोन करूचंती सब्जेक्ट टेक फॉर एग्जांपल आइलैंड कंट्री जोड़ा को मालदीव्स इज इन थ्रेट इज इन अ डायर थ्रेट ऑफ सिंकिंग सिमिलरली मेनी आइलैंड कंट्रीज स्मॉल कंट्रीज इवन फॉर एग्जांपल इन इंडिया बहुत गोटे कोस्टल सिटीज अच्छी आमर प्रेडिक्शन अच्छी 2075 मसीहा बेलू प्राय Bombay, Calcutta, Chennai, 50 to 75% of the land area will be submerged. जेमिति आमर ओडिया रे गोटे अच्युतानंद मालिका कहते जे 22 पास रे मीन खेलिता अर्थ सी लेवल राइज जेतेबेले पृथ्वी हिटिंग अप होउची सेतेबेले फ्रेश वाटर जो स्टोर अछि अंटार्कटिका रे बा आमर हिमालयन माने ग्लासियर्स रे से सब कोन होउची ना मेल्ट करची से मेल्ट कला परे दैट गोज टू द सी सो जेतले पानी जाउची कोठी के सी के जाउची एपटरे फ्रेश वाटर लॉस होउची आ सेपटरे सी लेवल राइज होउची सी लेवल राइज हेले कोन हबो ओडिशा कोस्ट इज वेरी वल्नरेबल फॉर द सी लेवल राइज बिकॉज एटा नेशनल एवरेज टरू माने 13 सेंटीमीटर पर ईयर बेसिस रे बढ़ुची ता अर्थ जो 480 किलोमीटर कोस्ट हमर अछि से कोस्टल डिग्रेडेशन होउची कोस्टल डिग्रेडेशन अर्थ कौन ना सी इनग्रेशन हम नदी माने समुद्र रु लुणा पानी भितर पशिव मीठा पानी फ्रेश वाटर क्राइसिस देखा जाव एंटायर कोस्ट एबे सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड गोटे स्टडी करथिला सेंट्रल ग्राउंड वाटर कमिशन से बर्तमान देखुचंती जे फ्रेश वाटर इज द बिगेस्ट क्राइसिस फॉर द कोस्टल एरिया मोस्टली इज राइस बोल और द फूड सिक्योरिटी पाई आर आवश्यकता बहुत अच्छी आ फ्रेश वाटर नहले ताहले एंटायर रीजन विल बी फूड इनसिक्योरिटी लेवल को पड़े जीव बहुत गुड़े प्रेडिक्शन अच्छी साइंटिस्ट माने प्रेडिक्ट कर बाहर करचंती जे बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज food production level will reduce to almost 15 to 20%, and some predictions also saying by 2050 if with the present crisis level almost 50% production will be in Gangetic basin माने reduction हे जीवो आपण मान जानि थिबे छोट छोट जिंस रे आपण सदा बेले डेली लाइफ रे चिंता करन आपण देखिथिबे
वर्तमान गोटे पीडीएस रे फूड सिक्योरिटी बा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जरिया रे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जरिया रे नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम गोटे हिच सेथिरे प्रति परिवार को आमे मागणार खाद्य दउचंती मागणार बा सब्सिडाइज रेट रे दउचंती सडनली लास्ट 5 years बिफोर गहमटा बंद हो गला इट बिकम ए पॉलिटिकल इश्यू कहीं गहम बंद है बहुत लोग बहुत कथा कहले किंतु एक्चुअली आम रिसर्च कहूँ गहम जिते बड़े ये जो वेदर वेरिएबिलिटी देखादेला से प्रोडक्शन डिक्लाइन करिगला प्रोडक्शन जो डिक्लाइन करिगला आपन तो बफर स्टॉक रखिया पड़ो आपनकर एफसीआई रे गोदाम रे तेणु आउ अधिका बलिलानी जे आमे सब्सिडाइज बा राशन लेवल रे देई परिबा जहा द्वारा कि पुणी राइस कंटिन्यू हला ए सिचुएशन टा इज गोइंग टू बी मोर prominent in coming years because we cannot guarantee of our productions because of climate change, drought, floods, cyclones, so many things are there, even pest attacks. ए आरी उपरे बहुत गुड़े डिजास्टर हवा को जाउछ इट्स ऑल प्रेडिक्टेड आगु तो प्रेडिक्शन बहुत प्रकार होतला एबे किंतु प्रेडिक्शन और अधिका भाव होउची जेते अर्ली वार्निंग सिस्टम होउची जेते डिजास्टर प्रिपेयरनेस होउची किंतु क्लाइमेट चेंज रो प्रभाव दिन को दिन भयावहता सृष्टि करुची जो इवन फॉर एग्जांपल वाटर इनसिक्योरिटी पानी नहले किछि हेई परिबा ना योर इंडस्ट्री कैन नॉट पॉसिबल योर फूड कैन नॉट पॉसिबल यू कैन नॉट रन योर सोशल लाइफ यू कैन नॉट रन एनीथिंग ना पानी मध्य गोटे विराट बड़ समस्या दे देखा दब कारण वर्षा नहले कोड पानी आसीबो ये गोटे फेज अच्छी जो आम इकोलॉजी कथा कहते मैडम क्लाइमेट चेंज गोटे बड़ समस्या है कि छिड़ा होता समय रे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आल्सो इज ए बिगेस्ट डिजास्टर ये दीटा जो मिसी जाउचंती ह्यूमन बा मनुष्य समाज पई बड़ विपद सृष्टि करचंती डिफॉरेस्टेशन एंड ग्राउंड वाटर मैक्सिमम ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शंस एयर पोल्यूशंस ये सब गुड़े से नेक्सस भीतर पशिगला को विशेष साइकिल हो जाउछ आगुरु गछ कटा हले जे क्लाइमेट चेंज हे जिवो वर्तमान एई भला अवस्था को आसी जो क्लाइमेट चेंज द्वारा ट्रॉपिकल स्टॉर्म होउची आपण जानितु इन फनी बात्या रे इन 2019 केवल पुरी जिल्ला रे 1.5 कोटी गछ more than 15 to 20 years, more than that, old trees have been uprooted. Similarly, जो जगह रे से hurricanes होची जो जगह रे tropical cyclone आसुची नष्ट हो जाउची तेणु जीवन बंचिबा दुर्विष हो पड़ुची तेणु वर्तमान गोटे विशेष साइकिल अच्छी क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन जहाँ को आम बुझंती जे जीएजी एमिशन रिडक्शन करवा आ गोटे आडप्टेशन आडप्टेशन रे जहाँ को आम रेजिलेंट कहते रेजिलेंस अर्थ आपण अवॉइड करेंगे रिस्क को बा कोप करेंगे एभलिया सिचुएशन को जो कोप्रे आपण जो रेजिलेंस मेथड रे जहाँ अफेक्ट होगा जाऊँ तार परिमाण कमी जीव बा आपण से बंची आसी पारे तेणु ये ब्रॉडली हेची कौन पाई ना ग्लोबल वार्मिंग हला परे आपण माने जानी थिबे जे कार्बन डाइऑक्साइड been sunk is been sunk by very different sources like forest sink, soil sink, ocean sink. वर्तमान यही सिस्टम टा एते जोर डिस्टर्ब हो जाइए आम पाखे सॉइल आम जेहेतु मैक्सिमम फर्टिलाइजर्स यूज कर फार्मिंग मेथड बदली जाइए मोनोकल्चर कर वर्तमान कार्बन टा जोड़ा सॉइल रहा कथा न रहीकि आटमोस्फेयर अच्छी तेणु ग्लोबल वार्मिंग होमिति फॉरेस्ट रे जो गछ रे कार्बन डाइऑक्साइड रहा कथा ऑक्सीजन आसवा कथा जेहेतु गछ काटी दौरान सी कौन कर आटमोस्फेयर को जाऊँगी आउ गछ सिंक कर पारना तेणु दुईटा लेवल रे कथाटा हूँ गोटे है आम गोटे हिस्टोरिकल प्रोसेस रे एभलिया इकोनॉमिक एक्टिविटी को नहीं बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ फसिल फ्यूएल्स एंड कोल्स आम ऑलरेडी गोटे टिपिंग पॉइंट रे अछंती
जोटी इरिभर्सिबल स्टेज रो अछंती अनेक गुडे जिनस इरिभर्सिबल आसीबो माने आमे रिभर्सिबल करि परिबा नाही बीट wild animals, forest or waters, culture, I mean so many biodiversity loss has happened. सेउटु वर्तमान रिवर्स करिया पई क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करिवार अछि ता अर्थ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन अर्थ आमे जी ग्रीन हाउस गैस एमिशन करिबा आपण जानछन्ती भारत वर्तमान थर्ड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस America is the top, China is the top, America second, and this India is the third. But per capita हिसाब रे देखिबा गले आमे कम रचंती तेणु एटा कमेया पई कोन हबो सेति पई साइंटिस्ट माने एनालिसिस करके देखिचंती देयर आर वेरियस सेक्टर्स लाइक एनर्जी नहला में किसी करि परिबा नाही घरे बंची पारि कोन लाइट लगे परिबा नाही पानी गरम करि परिबा नाही एसी चले परिबा नाही अधिका गरम होई गेलानी तेणु एनर्जी सोर्स रे प्राय 34% आमे जीएचजी एमिशन करचंती द सेकंड सेक्टर द इंडस्ट्री एंड माइनिंग सेथिरे आमे पर्टिकुलरली स्टील एंड सीमेंट से बेसिक एमिटिंग थिंग्स थर्ड होची एग्रीकल्चर लैंड यूज रे जेहेतु हमर परिवर्तन आछी आमे अधिका ग्रीन हाउस गैस एमिशन करूछंती मिथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फोर्थ होची ट्रांसपोर्ट एंड मोबिलिटी सेक्टर so this is the way they have identified किंतु सेति पई ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिडक्शन करिवा पई हेले से माने गोटे कहिसंती नेट जीरो ट्रांजिशंस प्रत्येक कंट्री को ऑप्शन देइसंती नेट जीरो ट्रांजिशन अर्थ जे आपण गोटे स्टेज आसीबो जो स्टेज रे आपण 100% एमिशन बंद कर देबे ता अर्थ आपण जेतिक कार्बन बजेट तैयारी करिवे कार्बन बजेट अर्थ आपण जेतिकी माने कार्बन बजेट आपण आसीबो जे आपण गछ लगेले ऑफसेटिंग हो बा क्रेडिट हो नेबे सेतिक परिमाण आपण एमिट करि परिबा आ अधिया करि पारि से बहुत वेरी बिग माने इश्यू वर्तमान कार्बन मार्केटिंग गोटे जो वॉलंटरी बेसिस आ गोटे होची कंप्लायंस बेसिस रे कंट्रीज आर फिक्सिंग द कैप आमे एतिकी करि परिबा आ अधिया करि परिबा नै तो सेही दृष्टि रे से माने कंपनीज जो माने प्रोडक्शन करचंती से माने नेगोशिएट करचंती जे आमे केमिति कंप्लाई करि सकू आ गोटे लेवल अछि वॉलंटरी मार्केट रे कंपनी टू कंपनी इट्स ए कंपनी टू रेगुलेटर इट्स कंपनी टू कंपनी जे प्रकृत रे मु जदी गोटे जागा रे अधिका गछ लगेली ऑर्गेनिक फार्मिंग कली बा वाटर हार्वेस्टिंग कली एवं कार्बन ऑफसेटिंग कली एवं कार्बन सिक्वेस्ट कली एवं जोउतरे जेटा ऑफसेटिंग दीटा करा गोटे मार्केटिंग रे गोटे होची कार्बन क्रेडिट नेबे कार्बन ऑफसेटिंग करिवे दीटा के क्रेडिट बेसिस किंतु सेही बेसिस रे बाई 2050 एटा करा हिची जे आमे पृथ्वी रे कार्बन डाइऑक्साइड को नेट जीरो लेवल को आनिबा ता अर्थ आमे जेतिक एमिट करथुवा सेतिक आमे रिमूवल करथुवा बा सिक्वेस्ट करथुवा तेनु आउ अधिका हबनी आहा हबा द्वारा साइंटिस्ट माने गोटे प्रेडिक्शन करचंती जे प्री इंडस्ट्रियल लेवल टेम्परेचर राइज टा जदि 1.5 डिग्री सेल्सियस एवं 2 भितर रुहे हुए तो ह्यूमन काइंड नेचर बा ये पृथ्वी बंची जीव जदि ता ऊपर को जाए ताला हमें it will be completely disaster and we cannot survive and planet cannot survive planet is not just temperature थरे गोटे जिनस डिस्टर्बेंस हेले जेमि आम बॉडी रे गोटे जागार किसी डिस्टर्बेंस हेले बा गोटे जागार किसी डिफेक्ट रहिले ता अफेक्ट्स एंटायर बॉडी सो सेमिति लाइफ ब्लड ऑफ अर्थ इज वाटर एयर आम जो पंचभूत कहते सब गुड़ाक थरे डिस्टर्बेंस हो गले ताको पुणी ओरिजिनल प्लेस को आनिबा पई इट बिकम्स ए वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग्स तेणु 1.5 to 2 भितर रखिबा पई प्रत्येक कंट्री तांकर इंटरनेशनली डिफाइंड नेशनल डिटरमिन्ड यू नो एनडीसी कमिटमेंट्स देइचंती सेथिरे भारत देइची बाय 2070 से नेट जीरो हो जिवो एवं से जो अप्रोचटा अच्छी आपण माने जतबेले एडमिटेटर हेबे आपण मानक पई सबुटु बड़ आह्वान हबो जे केमिति क्लाइमेट चेंज रेजिलिएंट सोसाइटी तैयारी करिबा एग्रीकल्चर सेक्टर हो एनर्जी सेक्टर हो वाटर हो
ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, वेस्ट मैनेजमेंट हो, प्लास्टिक पॉल्यूशन हो, बहुत गुड़े अच्छी जमी सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी हूँ गोटे अलग मेजर टू अडॉप्ट टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। सर्कुलर इकोनॉमी रे कौन अच्छी ना इट्स एनवायरमेंटल एक्टिविटी। कौन सर्कुलर इकोनॉमी रे प्रिंसिपल होची जीरो वेस्ट। आपण जहाँ नेचर रु नेबे जेकोसी जिनस से काठ हो, माटी हो, पानी हो, जेकोसी जिनस जेतेबेले आपण नेबे आपण सेई फॉर्म रे बा एभलिया जगह फेरउथिबे जहाँ द्वारा कि से नेचर भितरे ग्रहणीय हो जाउथिबो, वेस्ट हेक रहु नथिबो, ताकू कहते सर्कुलर इकोनॉमी। तेणु प्रोडक्ट इनोवेशन, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड adoption of technology is massively happening. Take for example लोक माने कहउचंती आज्ञा हमर जेमिति एबे आगुर थिला माने माने विश्वास करथले जे दिल्ली रे जो एयर पोल्यूशन होची से स्टबल बर्निंग बेसी रोल करची, किंतु एबे जा देखा होची स्टबल बर्निंग पंजाब, हरियाणा और तार नेबरिंग स्टेट रे बंद हला परे मध्य अधिका हटिंग होची एतपई जे वेहिकुलर पोल्यूशंस। तेणु वेहिकुलर पोल्यूशन केतल बंद हो जेतल आपण ग्रीन रिन्यूएबल सोर्स को जिबे। ग्रीन रिन्यूएबल सोर्स होची सोलार। सोलार बैटरी टेक्नोलॉजी इज द नीड ऑफ द आवर। EV इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज द नीड ऑफ द आवर। सो दीज आर द थिंग्स। तेणु आमे कहउछन होल ग्लोबल सोसाइटी, Indian society, American society, everybody talking about the transition to net zero. Net zero अर्थ आज आम कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करछंती, नेट जीरो स्टेज रे आमे आउ एमिट करबा नाही बा जहाँ एमिट करथवा ता रिमूवल हो जाउथवा आ एटमॉस्फेयर रही परिबो नाही। सेथि पई आमे गुटे ट्रैक रे अछंती, सेथरे रिन्यूएबल मूवमेंट इज गेनिंग। इंडिया वर्तमान कमिट करिछि बाय 2030 50% ऑफ इट्स electricity should be from renewable sources. GDP, GHG intensity in GDP has to be reduced to 50%. So बहुत गुड़े अप्रोच होती। तेणु आपण को प्रथम ये सबुथिरे आम आलोचना करवा, कार्बन क्रेडिट कौन, कार्बन मार्केट कौन, क्लाइमेट डिजास्टर कौन, ग्लोबल वार्मिंग कौन, ये सबू विषय आम आलोचना करवा। किंतु ब्रॉडली आपण गवर्नमेंटल एक्शन एंड पॉलिसी मेजर्स ऊपर देखंतु जे बेसिकली there is a variability in the climate is not as it was 50 60 70 years before. So if rain happens it is a disaster. Lightning, we are withstanding lightning today. Lightning is a deadly. Heat waves, heat stress, heat pumps, so many things are coming. If it is in as you know there are some 12 13 geographical specificities, koti Mediterranean, koti tropical, all these things are there. They have maintained the normal things. Now this normal situation has been disturbed because of climate change. So it becomes so frequent. So sethipai सारा पृथ्वी वर्तमान क्लाइमेट चेंज को प्रतिहत करबा पई आगे आछंती एवं एवरीबॉडी पुटिंग देयर हैंड जे हाउ टू मीट द लोकल नीड्स ऑन द क्लाइमेट पर्सपेक्टिव्स। आपण माने डेफिनेटली या ऊपर काम करबा उचित, बुझिबा दरकार, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आसबा दरकार। मु जाईतली एबे बहुत लोक देखछन हमर काहे कि कार्बन मार्केट ओडिशा इंडिया रे होनी। इंडिया एपन कार्बन मार्केट भितर पसी नाही। कार्बन मार्केट रे काहे कार्बन मार्केट इज ए मेकानिज्म फॉर रिड्यूसिंग GHG। फॉर एग्जांपल बर्तमान देखंतु आमे ओवर प्रोडक्शन करूचंती। मोर जा धारणा आमे एते प्रोडक्शन करूचंती। लेट्स टेक फूड, लेट्स टेक क्लॉथ्स, let's take whatever the technology you can say that we are consuming more. आमे जदि we can change our behavior, we can reduce our consumption, जो 3R principle, reduce, recycle and reuse, ताहले हुए तो pressure on earth will be there reduced. आपण को कहि रखे पृथ्वी रे वर्तमान 8.2 billion populations, 8.2 बिलियन पॉपुलेशन हवा समय रे आमे वार्षिक प्राय 164 बिलियन टन्स ऑफ रिसोर्स कंज्यूम करछंती। एवं आपण को मु कहि रखे पृथ्वी रे जेते रिसोर्स अछि, अर्थ रे जेते रिसोर्स अछि, से मात्र 1.2 बिलियन लोकन को पई सफिशिएंट।
किंतु आम पाखरे 8.2 बिलियन अच्छी 2050 मसीहा बेल को एटा कहुँ जे पीक टाइम जोटा आसब 10.3 बिलियन हम एवं 2080 मसीहा बेल को पॉपुलेशन डिक्लाइन देखा दे पारे ये हूँ तेणु पॉपुलेशन रो जो प्रेशर ऑन नेचर से आमको आम बिहेवियर रे परिवर्तन आनिबार अच्छी आमर आटिट्यूड रे परिवर्तन आनिबार अच्छी वी शुड बी नेचर फ्रेंडली वी शुड बी क्लाइमेट फ्रेंडली मु आपन ओडिशा विषय टे कहीदे आपण माने समस्ते ओडिशा रे पिला ओडिशा रो आगामी दिन रो लीडर आपण माने को ओडिशा रो भाग्य निर्धारित तो होबाक जाउची आपण जानछथि 2036 मसिया रे ओडिशा तार 100 वर्ष पूर्ति अवसर पालन करिवो इंडिपेंडेंट रो ओडिशा सेते बेले गोटे लिंग्विस्टिक स्टेट हिसाब रे आस्थिले किंतु एई 100 वर्ष भितरे सेते बेले Odisha was climate friendly, environment, everything was there. Today Odisha is climate unfriendly. आपण माने आश्चर्य हेबे 4,414 billion tons of million tons of carbon dioxide is being emitted in India. तार 10% प्राय 10% 9.7% 305 million tons of carbon dioxide केवल ओडिशा रे एमिट होउची जोटी तार पॉपुलेशन मात्र 3.47% 4.7% of area our economic contribution to the country matter 2.8%. Imagine unless you make your economy GDP climate friendly or climate sensitive or climate proof you cannot see the developed Odisha by 2036 or 2047. कहीं कहूँ आपण मन रखा दरकार यूरोपियन कंट्रीज से ऑलरेडी कार्बन GHG एमिशन रिडक्शन रे पढ़ी गले प्राय they are reducing the carbon dioxide emissions and GHG emission reduction for last 1 decade. Unfortunately India, America, China and few other countries are increasing. Odisha with just 9.6 lakh crores of GDP size होची GDP माने ओडिशा GDP size होची 9.6 crore 9.6 lakh crore माने 9,60,000 कोटी टंकार इकोनॉमिक साइज that is 2.8% of the national GDP किंतु आमे 9.7% GHG contribute करचु to the country. Maharashtra 42 lakh crores of rupees, Tamil Nadu 31 lakhs of crores of rupees, Karnataka 26 lakh crores of rupees of economy. किंतु सेमानकर per capita एवं total GHG emission is much less. Maharashtra is just 184 million tons. So now time has come. आमे जेहेतु economically we are highly dependent on mines and minerals, coals. So our GDP, our GHG GDP intensity is GHG intensity in GDP is high. So it's not efficient. So now we have to either think of moving away from the current economic model or to bring the transitions within the system like hydrogen, like for example renewable sources, maybe nuclear, maybe hydrogen, maybe ethanol, maybe other source. So that is what the need of the hour. And I think on action point, tree plantation emerges one of the most important measures. It's directly it can sequester the carbon dioxide from the atmosphere. And similarly, if you can just see the coastal forest like mangrove and seaweeds and ocean systems can sequester 10 times more than what the terrestrial forest can do. So we need to act upon on this. Government policies, programs, everything apart, unless there is a public mass movement,
climate change cannot be adopted and climate change cannot be mitigated and climate change cannot be combated. So now the time has come, we have to do that, and Odisha being a naturally rich state in terms of resource, mines and minerals, water, 11% of water in the country, we should move away from this negative remarks of 9.7% of GHG contribution to the country's economy, country's GHG. We should limit to this. So in the net zero phase, 3 times we have already done state action plans, but it's all disaster specific. Odisha has done a remarkable job on disaster because zero causality, but we have not been able to reduce our emissions. It is increasing. It was 98 million tons in 2012, today 315 tons. Just imagine CAGR of the increments. So now it's a big concern. Likewise India arguing climate justice, putting in the frame, but at the same time, there is, as you all know, jane विष खाई के मरीगला परे से डेभलप हो मरीगला परे आम से विषयटा को मेजर अप्रोच हिसाब से नबा नहीं आम डेभलपमेंट विकास रे लाइकवाइज हाई कार्बन एमिटिंग इकोनॉमी आम करिपरिबा नाही. सो नाउ ऑल ऑफ अस should come forward to combat climate change. For that, we need to understand various dimensions of climate change like ESG, like BRSR, monitoring reports, like sustainability measures. So that I think in class forward I can come forward with my briefs on all these things with diagram, how temperature rise, you can understand better. How Odisha temperature is rise, you can understand better. How India things are going on, that can better. What are the climate policies, approach, you can understand better. And many other issues we can see. For example, everybody talking about climate fund. $1.3 trillion rupees per annum from 2030 onwards needed to be net zero transition. Today, the developed countries, already those who have developed, those who have caused climate change, we have not caused climate change. They have caused climate change, now we are causing climate change. Just imagine what I said, there is two very diametrical opposite things are happening. Rich countries is the cause of climate change globally. Here, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, these are the high emitting states, the poorest states, because they are in a very different, what is it, गोलक धंदा भीतर पशि जाइछन्ति. तांकर माइन्स एंड मिनरल्स नेशनल इंटरेस्ट में बहुत जरूरी आ सेटू एक्सप्लोर होउची, किंतु सेमाने ये records are bearing. So we have to understand all these things. How to reduce emission. I think बहुत समय लोक कहते adoption करिबा, आमे टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करिबा and early warning system करिबा, आमर अनेक गुडी माने लाइक EV रे काम करिबा, आमे probably no technology adoption सहित आमे जदि mitigation और adoption approach को सांगरे नै कि जिबा ताहाले हुए तो आमे आगो को आम पृथ्वी को बंचै परिबा, and we can make sustainable development, inclusive development is the real. Just imagine forest dwellers who are the protectors of forest. Today they are the poorest of the poor people, and we are rating them in terms of our economic metrics. But if you see the climate metrics, we can see in a different zone. So this is what I want to submit, that going forward, I will go the environment and climate change chapter as syllabus talks about, with examples, with my briefs, with pictures, with photographs, with diagrams, everything. So I think that is the way we can understand climate change together for a better future. Thank you very much. I will be very happy to take the questions. Please share your questions without fear and favor, please. Mo lecture किछि सेंस तैयारी कला आपन को मुंड रे माइंड रे जदि करिछि ताले किछि क्वेश्चन करंतु एवं सजेशन भी दियंतु, सर
आम एमती गले बेटर वी कैन अंडरस्टैंड बेटर और क्लाइमेट चेंज को लेकिन जिते गुड़े क्वेश्चन अच्छी आपण मध्य पचारि पारती सर एक्चुअली आज टॉपिक तो थिला माने बहुत किछि जिंस सर बुझी हला क्लाइमेट विषय रे बट मो भाबु सर हमें जेमति सपोज किछि माने एगुडा को सब सर जेबे जेतो हमें वर्तमान फास्ट फेज रे अछु तो हमें बुझिया बे टिके हार्ड हैला बट माने उभरे के सब जिंस सर ठीक थिला बट हमें मो जो टॉपिक वाइज सर जदी गोटे किछि टॉपिक कोने डिस्कशन करा हम तो आगु बेटर हमें जानि पारे exactly that's the fantastic suggestions that's what I am saying because I wanted to understand you also wanted to understand the how we can design our the conversation going forward. It's fantastic. So I will certainly limit to my talk to topics so that you can better understand the subject. Yes. Yes, please. हाँ प्लीज सर हमारा जो क्लाइमेट चेंज को लेके बहुत बड़े इंटरनेशनल कन्वेंशन सर हेची से के सर टिके माने बुझिया पे टिके डिफिकल्ट रे कभी जाक मन रखे पे माने को कन्वेंशन में सब कोन हेतिला chronologically I will IPCC report among all conversation all treaties international treaties and convention and COP raw details up to 29 COP parjanta I can put it in a paper in particular chapter and make you understand. I think one tip I can give here जे आपण माने दीटा जिनस देखिए सबु जिनस मन रखा आवश्यकता नहीं कि सबु जिनस बुझा दरकार अच्छे देर आर सम इम्पोर्टेंट एरिया टेक फॉर एग्जांपल COP 28 एटा सरला अजरबैजान बाकुरे COP 29 ना 28 29 वेरी गुड थैंक यू 29 रे व्हाट आर द सेंट्रल सब्जेक्ट that you should understand say for example climate fund okay climate fund रे जेमिति loss and damage थिला 28 रे एठी Azerbaijan I mean सेठी कथा भी चलतिला जे कोन phase out from the coals and fossil fuels एवं ता ऊपर किछि आगु को गला नाही एवं जो माने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बा डेवलपिंग कंट्रीज जो प्राइस डिमांड करथिले से देई परले नाही $300 billion per year they have committed. So I think I will highlight that which are the things which are the most important outcomes so that it will be easier for you to understand, remember and write in your answers. So that I will prepare and let you know and that will be completely international treaties and conventions and conference parties and key outcomes of each events I will let you know, no problem. Thank you very much. Thank you, sir. Anything else? किए कहि परिबो या किए कहि परिबो वर्तमान जदि काली जेहेतु आपण माने ओडिशा सिविल सर्विस में प्रिपेयर करचोंती जे ओडिशा पई जदि आमे क्लाइमेट मिटिगेशन कथा कुहा जिवो व्हाट आर द की स्टेप्स अकॉर्डिंग टू यू is needed? Who can say? So industrial level changes करा रखा है जैसे कि मैंने हमें renewable energy रो use कर करीबा तापरे जोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होची सेटा रोकिया पे एनर्जी एमिशन हमर जोटा होची एनर्जी हमर जो कंजम्पशन ता होची सेटा हमें चेंज करबा रिन्यूएबल सोर्सेस को कि इलेक्ट्रिक है कहले आ सोलर एनर्जी सेटा करबा वेरी गुड आ फॉरेस्टेशन हाँ आई थिंक रिफॉरेस्टेशन दरकार एग्रो फॉरेस्ट्री दरकार वेरी गुड
एंड सॉइल कार्बन सिक्वेशन कैपेसिटी बढ़ेवा दरकार सो एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन दरकार वेरी गुड दीज आर द क्वेश्चंस आई एम श्योर यू या कहतु मैंग्रोव फॉरेस्ट रीजन करा पड़े आप गोटे छोट कथा कह मान काली जदि प्रिलिम रे क्वेश्चन आसला जे श्रिम्प फार्मिंग ओके आउ मैंग्रोव भितर आपन चॉइस दिया जीवो श्रिम्प फार्मिंग रे आपन पजल दिया जीवो जे प्राय यू नो लाक्स ऑफ फैमिलीज आर डिपेंडिंग ऑन चिंगुड़ी चाष रे हला कि एवं आपन चिंगुड़ी चाष को प्रिफर करिवे फॉर द फ्यूचर इकोनॉमी और मैंग्रोव एटा मैंग्रोव नष्ट करूची ना मैंग्रोव सस्टेन करिवे कोथरे आपन जिबे आ काहे की जिबे बुझिपारे कथाटा को चिंगुड़ी चाष होउची जानिथिबे श्रिम्प फार्मिंग जानिचंती माने कोस्टल एरिया रे जो जो जमी गुड़िक आमर सेटा होची कोस्टल डिजेनरेशन होउची आमे जो सॉइल आमे जो कोन कहउचंती आमर कौन तो ना सी लेवल राइज एवं कोस्टल डिजेनरेशन जोड़ा होची तार मेन कारण होची श्रिम्प फार्मिंग हवा द्वारा आमर सी इनग्रेशन रेट बढ़ुची कारण आपन जमी गुड़ा सब लुणा करी पकाउचंती आ सेठी चिंगुड़ी चाष करचंती आ चिंगुड़ी आपन सप्लाई करचंती बाहर को सेतरे गोटे इंडस्ट्री तयारी हो जाउची से इंडस्ट्री केम ऑफ एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट इट्स नॉट सस्टेनेबल डेवलपमेंट यू कैन हैव the natural चिंगुड़ी प्रोसेस चिंगुड़ी आपण पाई परिबे with mangrove is a major carbon sequestering thing so without without losing mangrove we should go for sustainable fishing that's called blue economy तो आपण सेही भलिया बहुत गुडे शॉर्ट क्वेश्चंस एवं मीडियम क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस ये सब गुड़ाक मटेरियल तैयारी करछु आई कैन शेयर विथ यू डिटेल्स ये गुड़ाक प्रैक्टिकली आपको दरकार हबो Sir, one of my suggestion is if we are going for shrimps farming is generally occur in the coastal belt and it will occur in a hectare of areas. Generally it will take some gunt हमरो ओडिया रे जेमति कहूचे 5 गुंठार गोटे पोखरी रे श्रिम्प्स फार्मिंग करा गला कि इट विल टेक ए पर्टिकुलर रीजन पर्टिकुलर एरिया को नै कि हम श्रिम्प्स फार्मिंग करूचे बट हमें जदी जोटा कि हेले माने कृत्रिम जंगल सृष्टि करिवा सेटा तो हमें सब माने गवर्नमेंट रो सेमते बहुत गुडे भी लैंड अछि हमें जोटा कि माने बेकार पड़िछि सेठी भी ना किछि धान चाष होउछि ना किछि भी होउछि से सब एरिया को हमें जदी फोकस करे कि हमें सेठी भी माने किछि जोडा को बढ़ुथिबा गछ को लगै परिबा ताहले एटा गोटे बेटर हो जेमति कि सर वन ऑफ द एग्जांपल लेला जतोले हमर माइनिंग करा जाउछि माने हम कहूछि सर आयरन और बेल्ट कथा कहूछि जोडा पडबिल आयरन और बेल्ट कथा कहूछि सेठी कोन होछि ना जतोले पहाड़ खोला है कि माटी बाहर छि माटी तळे आयरन और सब मैंगनीज अछि तो से माटी को जतोले गोटे एरिया रे डंप करा जाउछि से माटीटा धोई न जो बोली सेठी सर सब माने माइनिंग कंपनी माने सेठी सब गछ लगाउछन्ती जहा फल गछर चेरटा को माटी की धरि रखिबो आ एटा गोटे कृत्रिम जंगलर भ्रम सृष्टि करछि हम एंती करिकि भी तो माने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शनस करि परिबा हाँ 100% आई एंटायरली एग्री विथ यू किंतु मु आपन को दुटी कथा कहि दोछि आपन जेहेतु गोटे लैंड इश्यू कथा आसिले मु कहि दोछि आपन जानि पृथ्वी रे जमीर परिमाण बढ़ू नाही हैला जमी परिमाण कमुची ये जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस रे जमीर आवश्यकता बहुत अच्छी आप देखिए गत अक्टोबर नवेम्बर न मु पूर्व कथा कहते मार्च एप्रिल सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देले ये जो राजस्थान केस रे यू नो इकोलॉजी जो माने सोलर एनर्जी प्लस ये जो इंडियन बस्टार्ड इट केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट ओके लाइकवाइज गोटे प्रोजेक्शन अच्छी 2050 मसीहा बेलू इंडिया केवल अर्बन एरिया को अकोमोडेट करने 25 लाख हेक्टर जमीर आवश्यकता अच्छी आम पाखरे जो जमी अच्छी से जमी ऑलरेडी ऑक्युपाइड अच्छी आप जो कथा कहते चाष जमी उपरे प्रेशर जोड़ा चाष जमी न हो से आम गछ लगे पारिबा करि पारिबा किंतु
ये जो मिटिगेशन अडप्टेशन प्रोसेस रे एतिकी जमीर आवश्यकता अच्छे आम पाखे से जमी नहीं. फॉर एग्जांपल टेक फॉर एग्जांपल एनी अर्बन क्लस्टर यू गो जो जमी गुड़ाक चाष होता पानी थिला से बर्तमान कौन हो गला सीमेंटेड हो गला. सो अर्बन हिट वेव इज ए न्यू रियलिटी. तेणु आमको लैंड यूज गोटे रिफॉर्म आनिबार अच्छी लैंड यूज हाबिटेट मेंटेनेंस रिफॉर्म आनिबार अच्छी पॉलिसी करिवार अच्छी ये सब पर आलोचना करवा आर कौन प्लस एंड कॉन्स को देखा. बट वेरी गुड सजेशन जो जो जमी माने फांका पड़ी से जमी गछ लगे पारिबा एवं आमे कार्बन सिक्वेस्ट करि परिया. जेमिति एई वर्ष एक पेड़ माँ के नाम पे 140 कोटी गछ टार्गेट थिला ओडिशा पाई प्राय 6 कोटी गछ टार्गेट थिला. किंतु मु जते बेले आमे गलु गछ लगे बहुत गुड स्कीम अच्छी कांपा अच्छी सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन कहीं किंतु जमी गछ पाई जमी गछ पाई जमीर आवश्यकता एते परिमाण अच्छी जहाँद्वारा गवर्नमेंट स्कीम को टेकअप कर पारना. जदियो कहु जे ओडिशा रे 33% रु 39% जंगल अच्छी किंतु डेन्स जंगल इज लेस देन 17%. ताकू मध्य रिवाइव करिवार अच्छी अनेक गुड़े एक्शन पॉइंट करिवार अच्छी. किंतु ता पूर्वरु कार्बन डाइऑक्साइड बा क्लाइमेट चेंज रो गोटे इंटरनेशनल डायमेंशन अच्छी गोटे नेशनल डायमेंशन अच्छी गोटे लोकल कंटेक्चुअल डायमेंशन अच्छी. ये तीनटा कंटेक्स्ट को तीनटा डायमेंशन को आमे जेपर्यंत न बुझिथिबा आमे तार स्ट्रैटेजिक एक्शन देई परिबा नाही. काना सेठी गोटे बज वर्ड होची सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशंस सस्टेनेबिलिटी. फॉर एग्जांपल वर्तमान जो पोजीशन आउची लेट्स प्लास्टिक पोल्यूशंस is the biggest havoc and air pollution is the biggest havoc. So आमको ताकू सब गुड़ाक इश्यू को आम आलोचना करी आम विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द ट्रेंड देन and all these will be part of your questions in prelim, in main, even in your interview. So we have to discuss in details and take this matter forward. Thank you very much for the suggestions. I am very happy. Yes. Anything else? Thank you very much for the today. I think next time I will come with the PowerPoint presentations with my better analysis. Next 1 hour we can discuss many more. Thank you very much for today. Okay.